second topic, it is sequence and series. So in this section, we will discuss the sequence and series for the complex number and complex variable. The sequence and series and its related topic you had already studied in earlier semester, that some sequence is given, then how to define the convergence, what is the divergence, what is the series, how to check whether the series is convergent or not. You have also discussed some test to check whether the series is convergent or divergent. Then you discussed a power series, Taylor series expansion, Maclaurin series expansion, and so on. Now the things we discuss in complex analysis. So let us straightforward begin from the definition that what is sequence and what is series. So what is sequence and what is series? So first we define sequence. Now when we use the word sequence, it means it is always an infinite sequence. So an infinite sequence of complex number En plus Ibn for n belongs to n, and An and Bn are real number. Sequence means it is the succession of the term. We are not moving in detail, you have already know. An infinite sequence of the complex number an plus ibn, n tends to infinity, n belongs to n, an bn belongs to r, is convergent if and only if sequence an and sequence bn both are convergent. That is, an converges to some real number a and bn converges to some real number b. Double implies that the complex sequence an plus ibn converges to a plus I. I just recall you in one sentence that what is sequence? So the sequence of real number, it is the succession of the term given by some definite rule, say some function of n for n belongs to n. So if you write the sequence, an means it has the successive term a1, a2, a3 like this. For different values of n, you will get the different terms. Now this sequence is said to be convergent if limit n tends to infinity, an is exist or it is finite value. If limit of its nth term as n tends to infinity exists, then the sequence is said to be convergent, otherwise it is divergent. This is what you discussed in semester 1. For a simple example, if you take suppose the sequence is 1 over n. So if you find the n tends to infinity, so an will tends to 0. So you can say that the sequence an is convergent. Suppose if you take an equal to 2 power n, then as n tends to infinity, 2 power n tends to infinity. So you can say that
the sequence an is divergent. Suppose if you take an equal to -1 raised to n, means the sequence, it is like this. If you take n equals to 1, so -1 +1 -1 +1 and so on. So if you move in this pattern, and if you approach the up to last term, here an tends to infinity means when n is moving up to infinity. So we are approaching to the last term. So in this case, if you find the limit an as n tends to infinity, means the last term. So there are two possibilities. Either it is -1 or it is +1. Because all terms are will be either -1 or +1. So again the limit of this sequence does not exist. It exists means finite as well as unique. So does not exist. So this sequence is also divergent. ये आपने सेम 1 में पढ़ा था. ओके, इसी तरह से अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस है, सॉरी दो रियल नंबर की सीक्वेंस है an and bn, then the corresponding sequence of complex number, it is defined as a sequence of an plus I bn. तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? a1 plus ib1, सेकंड टर्म a2 plus ib2, थर्ड टर्म a3 plus ib3 and so on. So it is a complex sequence. Now this sequence is said to be convergent if both sequence an and bn are convergent. Okay, and if an ki limit a, bn ki limit b, so you can say that the limit of complex sequence an plus bn is a plus ib. इस तरह से तो ये कन्वर्जेंट होने की कंडीशन क्या है? आपकी दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए. जैसे मान लो सपोज if I will take the sequence, it's a very simple concept. Sequence 1 over n plus I n over n plus 1. So it is a complex sequence. If you compare with an plus ibn, so an is 1 upon n and bn is n by n plus 1. For n tends to infinity, an tends to 0, and for n tends to infinity, bn tends to 1. So you can say that this sequence will converges to, it is convergent. Of course, both are convergent. So it converges to 0 plus I 1. So that is equals to I. If you make here the changes like this, 1 by n plus I n square, then an tends to 0, n equal to infinity आप put कर लो तो ये first term 0 हो जाएगी and second term bn will tends to infinity. So in this both sequence, first sequence an is convergent. Convergent means इसकी लिमिट की फाइनाइट वैल्यू मिलती है, और दूसरी सीक्वेंस bn वो हो गई आपकी डाइवर्जेंट dgt. तो कुल मिला के ये सीक्वेंस real sequence is convergent, imaginary is divergent. So you can say that this sequence is, whole sequence is divergent, it's not convergent. ये CGT नहीं होगी, मतलब इसका nth टर्म आपको फाइनाइट नहीं मिलेगा. इतना सिंपल कंसेप्ट याद रखना है. अगर आप इसकी लिमिट निकालो तो क्या होगा? 0 प्लस आई इंफिनिटी, तो वो हो गया इनफाइनाइट. ठीक है यहाँ तक? So any sequence is convergent if both sequences are convergent, otherwise it is divergent. And infinite series अभी डिफाइन करते हैं, तो ये आपकी होगी सीक्वेंस. सीक्वेंस के ऊपर से इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी?
तो ये भी आपने पढ़ा है कि सपोज इफ यू आर हैविंग any sequence an, then the corresponding series means the sum of all terms a1 plus a2 plus a3 plus a4 and so on. This is called infinite series. Infinite series. So sequence is the succession of the term and sum of all terms, it is called the series. If this is infinite terms in the sequence, then the series is called infinite series. Okay, and this infinite series you can also denote by the notation summation an, where n varies from 1 to infinity. यहाँ पर भी हम जब infinite series की बात करते हैं तो दो टर्म आती है, either the series is convergent or it is divergent. कन्वर्जन में क्या कंसेप्ट है इसका, ये जो सम आपका है इनफाइनाइट सम, if this infinite sum is finite then it is called convergent, otherwise it is called divergent. So an infinite series of the complex number, it is defined as summation n varies from 1 to infinity an plus ibn, that is equal to a1 plus ib1 plus a2 plus ib2 and so on, is said to be converts to the sum a plus ib. मीन्स ये इनफाइनाइट सीरीज मतलब ये इनफाइनाइट टर्म का सम एडिशन, इट इज कॉल्ड a plus ib if series sigma an and sigma bn both are converges to a and b respectively. रियल नंबर की सीरीज an and series bn, if these both are converges, मतलब ये दोनों का आपको कन्वर्जेंट मालूम है ए और बी के ऊपर, मीन्स बोथ आर हैविंग द फाइनाइट सम, सो यू कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट. ये कैसे चेक करना है सीजीटी डीजीटी, वो आपने सब टेस्ट पढ़ लिया है. ठीक है, इसमें कौन कौन से टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, हार्मोनिक पी सीरीज टेस्ट, like this one. So the same thing you have to check it for both individual series. Okay, and if first series converges to a, second series is converges to b, then you can say that the complex series is converges to a plus b. तो ये आपका एक simple definition. Now what is the absolute convergent? Absolute convergent means the series is said to be absolutely convergent if the corresponding series of modulus is convergent. Means it is defined like this. The series is said to be absolutely convergent if the series of modulus a plus ib is convergent. तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सीरीज दिया हुआ है an प्लस ibn, अगर ये सीरीज की हर एक टर्म की मॉड्यूलस लेके आप सीरीज बनाओ an प्लस ibn, अगर ये CGT होती है, if this series is convergent, then you can say that the original series is convergent or CGT. So from the name itself you can understand absolute convergent means the absolute series of the term is CGT. Okay, every absolute convergent series is always convergent. जो भी सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट ही होगी. ओके, ये भी एक रिजल्ट है दैट वी एज्यूम. ठीक है, नाउ हाउ टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सीरीज. मींस अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सीरीज दी है तो वो सीजीटी है कि डीजीटी है, कैसे चेक करना है. So we are using the same test. There are two tests. First, it is called the D'Alembert ratio test.
It is named after the mathematician Jean Baptiste Le Rond d'Alembert, French mathematician. जो टेस्ट आपने रियल्स इनफाइनाइट सीरीज में अप्लाई किया था, वही टेस्ट, ऐसा ही टेस्ट आपको कॉम्प्लेक्स इनफाइनाइट सीरीज में भी अप्लाई करना है. So what is the statement? For given infinite complex number series, summation Zn, Z is the some complex number, equals to summation An plus Ibn, such that limit n tends to infinity, Zn plus 1 divided by Zn equal to suppose L. तो आपको कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है और इसके n+1 टर्म और nth टर्म, the modulus of the ratio of these two terms as n tends to infinity equals to L. Ratio of two consecutive term, उसके मॉड्यूलस का लिमिट वो निकालना. यही सेम चीज आपने सेमेस्टर 1 में अप्लाई किया था. अगर मान लीजिए इसकी लिमिट L आती है, then number 1, if L less than 1, then the series is convergent or the series converges. तो अगर ये लिमिट की वैल्यू 1 से कम आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेस होगी. इनफैक्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेस, वो सीरीज आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी. दूसरी कंडीशन, इफ L ग्रेटर देन 1, इफ लिमिट ग्रेटर देन 1, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट और यू कैन से द सीरीज डाइवर्जेस. एंड इफ L इक्वल टू 1, देन द टेस्ट इज फेल. सो यू कैन नॉट मेक एनी कंक्लूजन. तो कोई भी प्रॉब्लम में अगर आपको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है तो आपको n+1 एंड nth टर्म का रेशियो निकाल के इसका मॉड्यूलस लेना है. मॉड्यूलस जो आएगा उसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालनी है. अगर वो लिमिट की वैल्यू 1 से कम आती है, लेस देन 1 आती है, तो आप कह सकते हो कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है. ग्रेटर देन 1 आती है तो वो डाइवर्जेंट है. एग्जैक्टली 1 आती है तो ये टेस्ट फेल हो गया. सो नो कंक्लूजन. एक बात याद रखना, ये टेस्ट से हमको सिर्फ सीरीज की कन्वर्जेंसी की ही पता चलता है. आप सिर्फ कन्वर्जेंस है कि नहीं वही बता सकते हो. यू कैन नॉट फाइंड द सम नहीं निकाल सकते. कन्वर्जन मतलब इसका सम फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, या तो फिर फाइनाइट होगा उसका सम या सम डज नॉट एग्जिस्ट. उतना ही बता सकते हो. सम होगा कि नहीं होगा तो कितना होगा वो बात की बात है. तो इन फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज सीजीटी है कि डीजीटी है. तो एक ये टेस्ट है. बहुत सारे टेस्ट आपने पढ़े थे सेमेस्टर 1 में. अभी हम लोग यहाँ पे कुछ लिमिटेड टेस्ट ही अप्लाई करेंगे. दूसरा टेस्ट था हमारा कोशी रूट टेस्ट. इसकी प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमें स्टेटमेंट याद रखना है दोनों टेस्ट की. कोशी में क्या है? सो इट इज नेम आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन Augustin Louis Cauchy. What is the statement? So for a given infinite series of complex numbers, summation Zn is the nth term, that is equal to summation An plus Ibn, such that the nth root of modulus of Zn as n tends to infinity equals to L. Means ये जो आपकी nth टर्म है इसका मॉड्यूलस लेके इसकी nth रूट निकालनी है आपको. nth रूट की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. इफ दिस लिमिट इज L, देन इफ L लेस देन 1, देन द सीरीज कन्वर्जेस. सेम सिनेरियो, अगर लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, ऐसा बोल सकते हो. मतलब इसका आपको कोई फाइनाइट सम मिलेगा. कितना मिलेगा वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम निकाल सकते हैं इसका सम, उसकी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, उतना ही है बस. कितना होगा वो बाद में देखेंगे. तो लेस देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट हो गया, सीजीटी हो गया. इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सीजीटी. सीजीटी मतलब उसकी वैल्यू फाइनाइट होगी. सेम सिनेरियो, इफ L greater than 1, then the series diverges or you can say divergent. And if L equal to 1, then the test is fail.
So to check the convergency of the complex number series, you have to apply either Cauchy ratio test or you have to apply the D'Alembert root test. Many tests are there, but right now we are focusing on only these 2 points. तो कौन से टेस्ट कहाँ पे लगाना है? Let us see. First of all, some example. Discuss the convergence of the following complex series. आपको 2 चीज पे फोकस करना है. ये आपका प्री रिक्विजिट है, इसकी रिक्वायरमेंट है हमें, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं शुरू में. आपको आइदर रूट टेस्ट अप्लाई करना है या फिर आपको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है. ठीक है. इसकी ट्रिक क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में आपको फैक्टोरियल टर्म आती है, जैसे ये हो गया, वैसे तो कोई भी टेस्ट लगा सकते हो आप. एनी प्रॉब्लम you can solve by either of the test, but for simplicity, if you are having the terms like factorial, look at in first and second example, n factorial is there. तो जब भी आपको फैक्टोरियल क्वेश्चन में दिया है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको वहां पे रेशियो टेस्ट लगाना है. रेशियो टेस्ट से फट से प्रॉब्लम क्रैक हो जाएगा. ठीक है. और पावर में n दिया है, पावर में n दिया है, जैसे ये देखिए यहाँ पे n अपॉन 1 प्लस आई प्लस n, इसकी पावर n स्क्वायर, n स्क्वायर, ऐसा कोई पावर दिया है तो आपको वहां पे रूट टेस्ट अप्लाई करना है. ठीक है. यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई करना. यहाँ पर देखो बी एग्जाम्पल में यहाँ पर भी n दिया है, यहाँ पर भी आप रूट टेस्ट लगा सकते हो. ठीक है. लेकिन यहाँ पे n फैक्टोरियल का nth रूट निकालना पड़ेगा, तो उसकी फिर आपको पूरी थ्योरी समझनी पड़ेगी कि भाई n फैक्टोरियल का nth रूट कैसे निकलता है और व्हाट इज द वैल्यू. ठीक है. यहाँ पर भी आप लगा सकते हो रूट टेस्ट, लेकिन यहाँ पे n फैक्टोरियल का nth रूट आया. समझ में आ रहा है? तो इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन में फैक्टोरियल दिखे कहीं पर भी, तो आप सीधा रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दो, अदरवाइज आप रूट टेस्ट पे चले जाओ. क्लियर है यहां तक? तो देखते हैं किस तरह से इसको करना है. सॉल्यूशन. फर्स्ट एग्जांपल ए. You have to check the convergency. So let us call the nth term as a Zn. So let Zn equal to 1 plus I power n divided by n factorial. We are going to apply ratio test. So we obtain the next term, n plus 1 term. So as Zn plus 1 is 1 plus I power n plus 1 divided by n plus 1 factorial. Now for ratio test, we require the ratio of 2 consecutive terms. So first you obtain Zn plus 1 divided by Zn. So Zn plus 1 is 1 plus I power n plus 1 divided by n plus 1 factorial. In the denominator Zn, so this is Zn. In the denominator means we put the reciprocal of Zn in multiplication. जो यहाँ पे छेद में वैल्यू दी है उसको हम उल्टा के इसके मल्टीप्लीकेशन में कर देंगे. तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 प्लस आई की n पावर. इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म तो क्या होगा, क्या होगा बताओ. इसमें ये n फैक्टोरियल यहां से चला जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे n प्लस 1 प्लस आई बाय n प्लस 1. ठीक है. और ये n टर्म कैंसल. तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस आई डिवाइड बाय n plus 1. What is this? This is the value of
Zn plus 1 divided by Zn. Now we'll take the n tends to infinity of its modulus. So therefore, limit of n tends to infinity mod का Zn plus 1 by Zn equal to n tends to infinity. इसका मॉड्यूलस 1 plus I divided by n plus 1. So 1 plus I divided by n plus 1. चलो 1 plus I का मोड क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ 1 plus I कितना होगा? √2 और n plus 1 n क्या है आपका? n कहां से आया? तो n इज द वैल्यू लिमिट्स ऑफ द समेशन, यहां से आता है n. तो n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो 0 1 2 3 इस तरह से. तो n plus 1 ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इसका हो गया √2 by n plus 1. If you take n tends to infinity, so this value is 0. Now compare this value with 1. एक से बड़ी है कि छोटी है? छोटी, less than 1. So therefore, by ratio test, given series is B. Nth term Zn minus 1 की n plus 1 n factorial बटा n power n. Zn plus 1 minus 1 की n plus 2 n plus 1 का फैक्टोरियल बटा n plus 1 की n plus 1 पावर. Therefore, the Zn plus 1 divided by Zn. So minus 1 n plus 2 n plus 1 factorial divided by n plus 1 into इसका रेसिप्रोकल nth टर्म का n पावर n minus 1 पावर n plus 1 into n फैक्टोरियल. इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा? तो एक तो आपका n फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल यहां से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? n plus 1. ये n plus 1 पावर कट हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे? -1. और यहाँ से कुछ कट नहीं होगा, और ये जो n plus 1 है एक यहाँ पर, यहाँ से डिनोमिनेटर में से एक n plus 1 कट हो जाएगा. So equal to minus, this is -1 into n plus 1 divided by n plus 1 power n plus 1 into n raised to n. This is n raised to n. एक n plus 1 cancel. So n raised to n divided by n plus 1 raised to n. If I will take this n,
inside the bracket आप इसकी सर होल माइनस n साइन पावर होगी। बाहर ले लो। हाँ माइनस आ गई, माइनस साइन और वो n पूरा बाहर ले लो, तो n डिवाइड बाय n+1 की पावर n। इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस लेंगे तो प्लस हो जाएगी साइन। So this implies that mod z+1 by zn क्या होगा, तो ये प्लस हो जाएगी साइन, n तो पॉजिटिव है। आई विल टेक दिस n, ये जो n है आपका न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगी ये टर्म 1 डिवाइड बाय 1+1 बाय n होल रेज टू n, और यू कैन राइट 1 डिवाइड बाय 1+1 by n की n power. Now take n tends to infinity. So for n tends to infinity, zn+1 by zn का mode equal to limit n tends to infinity 1+1 by n का n. Can you say what is the value of this limit? 0। 0. 0 होगा, 1 0 0 कैसे 0 होगा? 0 1 1 1 1 1 1 1 इंफिनिटी है, 1 1 ये वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी है ना। n टेंस टू इंफिनिटी, ये डिनोमिनेटर का देख लो ना, डिनोमिनेटर का आंसर मिल जाएगा, तो उसको उल्टा देंगे हम, ये वैल्यू चाहिए हमें, ये वैल्यू। n टेंस टू इंफिनिटी कितना होगा इसकी वैल्यू? इफ यू टेक n टेंस टू इंफिनिटी क्या होगा? 1 सर। कैसे इंफिनिटी डालो क्या होता है? 1/∞ 0। हाँ ये 0 है ना, ये 0 हो जाएगा ना। रेस टू n नहीं होगा। हाँ तो 1 रेस टू इंफिनिटी, ये n इक्वल टू इंफिनिटी डालने का ना, तो ये तो 1 रेस टू इंफिनिटी कितना होगा? अगर आप n, हाँ 1 रेस टू इंफिनिटी 1 होगा, यस सर। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा कि नहीं? 1 रेस टू इंफिनिटी 1 कैसे होगा? 1 की पावर इंफिनिटी, वो 1 कैसे होगा? ये 1 होगा। इफ यू टेक, इफ इट इज 1, तो आप दोनों तरफ लॉग ले लो, तो log 1 रेस टू इंफिनिटी को log 1 कितना होगा? 0। इंफिनिटी आगे आ जाएगा इसके log 1 के, तो ये क्या हो गया? इनफैक्ट 1 रेस टू इंफिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। तो सर क्या करें फिर इसकी वैल्यू? याद नहीं आ रहा है? अरे भाई ये नो सर। स्टैंडर्ड, ये हाँ बोलिए नो किसी सर। को। हाँ नहीं आ रहा है किसी को याद? इसकी वैल्यू 1 डिवाइड, याद आया अभी?
n टेन्स Yes, टू sir. હે Yes, sir. આયા ને હા એટલે આની યાદ રાખજો લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1 + 1 / n રેઝ ટુ n એનો આન્સર e થાય એક્સપોનેન્શિયલ નંબર e આ પ્રૂવ પણ તમે કરી શકો the limit you can prove it આ 1 રેઝ ટુ ઇન્ફિનિટી થાય ને 1 રેઝ ટુ ઇન્ફિનિટી બેઉ સાઈડ log લઈ લો તમે and apply L'Hopital's rule so you'll get 1 / e ચલો 1 / e ની વેલ્યુ કેટલી થાય લેસ ધેન 1 થાય કે ગ્રેટર ધેન 1 થાય what is e e is at 2 point something so it is Less than 1. denominator so this is less than 1 so series is Converges. therefore given series is convergent બરાબર છે આ લિમિટ યાદ રાખી દેજો સ્ટાન્ડર્ડ લખું છું સાઈડમાં જુઓ લિમિટ n tends to infinity 1 plus x upon n raised to n equal to e power x જ્યારે પણ આ ફોર્મ ઇન્ફિનિટી થાય 20 તો અહીંયા જે ટર્મ હોય બ્રેકેટના અંદર આ જે ટર્મ છે અહીં બ્રેકેટમાં એનો રેસિપ્રોકલ એ બ્રેકેટની પાવર હોવી જોઈએ એટલે આનો રેસિપ્રોકલ વ્યસ્ત એટલે 1 + x પાવર n x by n એની n by x હોવો જોઈએ x નથી એટલે x ને આપણે પાવર કરી અને પછી બાર 1 upon x લિમિટ્સ યાદ રાખજો આનો યુઝ કરવાનો now look at the next problem third one कौन सा था तीसरा वाला देखो see the nth term N upon 1 plus I plus ये वाला n divided by 1 plus I plus n raised to n square n divided by 1 plus I plus n raised to n square હવે આમાં n ની n plus sorry n square power આવે છે સો અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ રૂટ ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાનો मैं તમને કોઈ ફેક્ટોરિયલ કેવી ટર્મ આવતી હોય તો you have to go priority for ratio test otherwise for the n power is given only you try the ratio test पहले इसका nth रूट निकाल देना है ठीक है सो मॉड्यूलस zn का nth रूट निकालो क्या होगा so therefore this implies that nth root of n plus 1 plus I power n square nth root means 1 by n power raised to 1 by n so what you are getting this is n 1 plus I plus n and this is n power ठीक है now take its n tends to infinity and then modulus so implies that limit n tends to infinity
nth root. So limit n tends to infinity, nth root तो हो गया इसका, so n divided by 1 plus I plus n की पावर n. क्या होगा बताओ इसका आंसर? You have to use the same technique. So limit n tends to infinity. ठीक है, now take this n in denominator. So 1 divided by 1 plus I power n plus 1, right? It's nth power. चलो क्या होगा इसका आंसर? Limit n tends to infinity. I will write in this way. 1 plus I power n की पावर n. बताओ ये n tends to infinity में कितना होगा इसका आंसर? 1 by e raised to 1 plus I. हाँ लिखा था ना मैंने अभी, ये नोट याद रखना है आपको. So therefore limit n tends to infinity, nth root of equal to 1 by modulus e raised to 1 plus I. e raised to 1 plus I का मॉड्यूलस क्या होगा? हाँ, e raised to 1 plus I रूट टू कहां से होगा? cos square theta plus sin square. गलत. हाँ, e raised to I का वैल्यू क्या हो गया? e cos theta plus. e into e raised to I, ऐसा होगा कि नहीं? Yes sir. e into e, अभी ये e तो बाहर हो गया और e raised to I का मॉड्यूलस 1. Yes sir. cos 1 plus I sin 1, so 1, तो इसका आंसर हो गया 1 upon e. Now 1 upon e is less than 1, so therefore given series is convergent. समझ में आ गया? तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सीरीज दिया है, इसका कन्वर्जेंस चेक करना है, तो आपको आइदर ऑफ द टेस्ट अप्लाई करना है, बस इतना याद रखना. और जहां तक अगर फैक्टोरियल टर्म आती है तो आपको रेशियो टेस्ट अप्लाई कर देना है. अगर फैक्टोरियल टर्म नहीं आती है तो आप रूट टेस्ट अप्लाई करो या रेशियो टेस्ट अप्लाई करो, विच एवर इट इज पॉसिबल. ठीक है, इस तरह का. सो दिस इज व्हाट जस्ट वी रिकॉल the previous thing. Now we define the main aspect of this topic. Particularly, the whole subject is remaining portion of this chapter will move around power series. So what is the power series? So we define the power series first of all. So an infinite series of the form E0 plus A1 z minus z0 plus A2 z minus z0 का स्क्वायर plus A3 z minus z0 का क्यूब plus and so on up to infinity. In notation, summation it is written as summation n varies from 0 to infinity an z minus z0 की power n. This is called the infinite power series in powers of z minus z0. ऐसा ही पावर सीरीज आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा था. टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन इन पावर सीरीज, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पावर सीरीज का सॉल्यूशन निकाला था. सो
is called generalize the power series in powers of z minus z0, where an belongs to C. This C means set of complex number. So these coefficients A0, A1, A2, A3 and so on. These are the complex coefficients and n equals to 0, 1, 2, 3 and so on. Z0 is a fixed point. This is some fixed point. जैसे हम लोग टेलर सीरीज में निकालते थे कि भाई एक्सपांशन किसी फंक्शन का दिया है आपको निकालने के लिए इन पावर ऑफ x माइनस 1, ऐसा आपने प्रॉब्लम किया था सॉल्व। अगर कोई भी फंक्शन दिया है कि भाई एक्सपांड द गिवन फंक्शन f(x) इन पावर्स ऑफ x माइनस 1, so you took here a equals to 1 in the real number system. The same thing it is in complex. So a is the fixed point 1. Right now we are having the set 0. समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपकी पावर सीरीज। Z0 is a fixed point in a complex plane. It's called the power series in powers of z minus z0 or powers about z0 or at center z0. પાવર સિરીઝ ની ડેફિનેશન આપી, જનરલાઇઝ પાવર સિરીઝ નો ફોર્મ છે, સ્ટાર્ટિંગ ટર્મ એનું 0 પાવર થી થાય, z માઇનસ z0 ને 0 પાવર એટલે 1 આવે, a0 a1 a2 એ બધા કોન્સ્ટન્ટ થાય. This is called the power series in power of z minus z0 કહેવાય અથવા એને કહેવાય about the point z0 or at the center z0. The power series summation an z minus z0 power n is said to be convergent. Again the same concept. આપણે જ્યારે પણ infinite series ની terminology નો use કરીએ, when we use the word infinite series, the first question is whether the sum is finite or not. So that's why we are discussing the convergence. So the power series is said to be convergent if the sum is finite and otherwise it is called divergent. तो आपको कन्वर्जेंसी चेक करनी पड़ेगी पावर सीरीज की, whether it is CGT or DGT. To discuss the convergence of the power series, we apply either ratio test or root test. આમાં પણ કોઈ પણ પાવર સિરીઝ આપી હોય એને ચેક કરવા માટે આપણે કાં તો રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાનો અથવા રૂટ ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાનો, જે આપણે આગળ કોમ્પ્લેક્સ નંબરની સિરીઝમાં ડિસ્કસ કરી ગયા. We are having the same both test. So the first few tests same much, just it is written the nth term un in place of zn. So an infinite power series un, that is an z minus z0 power n, is convergent if, now in ratio test we have to take the ratio of two consecutive terms. So if n tends to infinity, modulus un plus 1 divided by un, same thing, equals to n tends to infinity, this is un, nth term un. So what is un plus 1? un plus 1 क्या होगा आपका? un plus 1 will be an plus 1 z minus z0 raised to n plus 1. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी un plus 1 की, an plus 1 z minus z0 power n plus 1 divided by an z minus z0 raised to n. Now if you give little simplification, then this n power z minus z0 cancel. So an plus 1 upon an, it is in one modulus, and in numerator only z minus z0, so that is modulus z minus z0. Now you call, suppose, assume that this limit equals to L. લિમિટ તમારી સેમ જે આપણે આગલા ત્રણ પ્રોબ્લેમમાં કર્યું એ ટાઈપની આવી જાય. એક્સ્ટ્રા ટર્મ હવે પાવર સિરીઝમાં શું આવશે? અહીંયા મોડ્યુલસ z minus z0 આવશે. So suppose this limit is L. So L into z minus z0. Okay. So now the series is convergent. The series is convergent if this quantity is less than 1.
એ ઉપર સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું છે કે an infinite power series is convergent if this quantity is less than 1, where the value of L is n tends to infinity an plus 1 upon an. તો આટલો પોર્શન આપણો રેશિયો ટેસ્ટ. આ જ પાવર સિરીઝમાં તમે અહીંયા આગળ રૂટ ટેસ્ટ પણ એપ્લાય કરી શકો. So in the root test, what you have to take here? Root test માં શું થશે? So in the root test, you have to replace this ratio by nth root of un. So if you take the nth root of un, so this is un, this is un. If you take its nth 1 by n power, so un is modulus an z minus z0 power n any 1 by n power. 1 by n power તમે કરશો એટલે આ n કટ થઈ જશે. Modulus z minus z0 outside and nth root of mod an. Now assume that this quantity limit equals to L. So you put it over here L. So again you are having the similar type of the statement that L into z minus z0 should be less than 1. So both case the series is convergent if L into z minus z0 less than L. Here in ratio test the value of L is different. What is L? N tends to infinity nth root of modulus of n. Clear that law? So either you apply the ratio test or you apply the root test. In case of the power series, the last condition conclusion is L into z minus z0 should be less than 1. If this is less than 1, then the series is convergent. Means you will get the finite sum. Otherwise, the series is divergent.